Yes, so we were doing this. If you have the, suppose you break the chocolate in two equal parts. Suppose here, just wait a minute. Not to save chat. Close. You will not be able to unmute yourself. I know. Please keep your cameras on and look here. Okay. Because see, 1 upon 2 is equals to 2 upon 4, and this will be equal to like 1, 2, 3 parts you have divided 1, 2, 3. Out of 6 parts, you give given 3 parts. So they all are equal. These fractions are equivalent fractions. These fractions are equivalent fractions. 1 upon 2 is equals to 2 upon 4 is equals to 3 upon 6. राइट सो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अब अगर आप इसमें से 4/6 कर देते 4/6 देन इट विल नॉट बी इक्विवेलेंट तो ये 4/6 इक्वल नहीं होता ओके सो ऑल द नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट सारे इक्विवेलेंट नहीं होते हैं जैसे आप चाहो कि कुछ भी इक्विवेलेंट हो जाए ऐसा नहीं होता है सो हाउ टू टेक आउट दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते कैसे हैं ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैलकुलेट कैसे करते हैं यस So we calculate the equivalent fractions like अभी कुछ नहीं लिखना है you don't have to write anything just look on the board okay so equivalent fractions calculate कैसे करते हैं for example 2/5 is given to us and we have to calculate its equivalent fraction ठीक है तो इसे क्या करेंगे we will start from 1 से करोगे बेटा तो same answer आएगा if we start from 1/1 तो सेम आंसर आएगा 2/5 उसे करने से कोई फायदा नहीं है 2 1 2 5 1 5 सो वी स्टार्ट फ्रॉम द 2 हम 2 से स्टार्ट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर आल्सो बाय 2 एंड डिनोमिनेटर आल्सो बाय 2 बेटा 2/2 दिस शुड बी सेम ये सेम नंबर होना चाहिए अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर नीचे दोनों जगह 3 होना चाहिए अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों जगह ऊपर जगह 4 से होना चाहिए सो 2 2s are 4 और डिनोमिनेटर में 5 2s are 10 so 4/10 is the equivalent fraction of 2/5 okay अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो व्हाट वी विल डू वी विल मल्टीप्लाई बाय 3/3 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 3s are 6 5 3s are 15 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है अब नेक्स्ट नंबर निकालना है 2/5 तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई 3 के बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट 3 के बाद 4 कम्स नेक्स्ट 4/4 से we have to multiply 2 4s are 8 5 4s are 20 okay like this we will do I hope you all of you understand those who are not able to understand Jaskaran I think my network is good everyone if my network is coming properly raise your hands if my network is coming properly then raise your hands okay Jaskaran I think some network issue from your side then not my side okay then now tell me one thing everyone if you are unable now lower your hand everyone lower your hand everyone lower your hand today is very cold day this today it's freaking cold out there are you feeling cold how many of you are not feeling cold and not wearing sweaters how many of you are not wearing sweaters Kunal Patel पूरा पैक होकर के बैठे हो बेटा who is not wearing sweater and who is not सामर्थ को नहीं लग रही है ठंड है ना सामर्थ यू आर नॉट फीलिंग कोल्ड यथार्थ को भी नहीं लगती है यथार्थ को तो लगती ही नहीं है आई एम टेलिंग हिम यथार्थ ही ऑलवेज सिट लाइक विन वन टी शर्ट और शर्ट दैट्स इट बस एक शर्ट में बैठता ही है बस ऑलवेज आई कैन सी हिम ही नेवर फील कोल्ड है ना यथार्थ ओपन योर माइक Yes, ma'am. है ना ठंड तो लगती नहीं है बेटा तुमको Ma'am, but I wear a inner. you wear inner but it's not inner wali thand it's more than inner wali thand okay and you never feel I have always seen you sitting in a single shirt or t-shirt you never feel cold है ना यथार्थ you never feel cold ना और कौन है without Yes, cold वाले ma'am. let me see अरे today युवराज नागर are you present today बेटा how come कैसे आज present हो गए
How you are present today, Yuvraj Nagar? Yeah. Numerator denominator को same से multiply करते. We multiply with the same thing, right? Okay. Now we will do the next question. Write the equivalent for the one is done for you. Okay. Take out your maths fair notebooks, everyone. Take out your maths fair notebook quickly, jaldi se. Maths fair notebook nikalo. Without wasting any more time, take out your maths fair notebook. Maths fair notebook. Okay. And maths fair notebook. A new page you have to take out. A new page you have to take out. Okay. Maths fair notebook mein new page you have to take out. Then on a new page write exercise 7.5. Write exercise 7.5 in your maths fair notebook. I'm writing down the day also here. Put down the date as well as day. और बेटा चैप्टर मैंने डिवीजन वाला शेयर की थी पूरी पीडीएफ, सब अपना एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना उस पीडीएफ से. ओके, राइट क्वेश्चन ए. क्वेश्चन इज राइट द equivalent की स्पेलिंग ठीक से लिखना. If you are not unable to understand from here, you can see in your book the spelling of equivalent. EQUIVALENT. Equivalent fractions. Write the equivalent fractions. Write the equivalent fraction. बस इतना लिखो. Write the equivalent fraction. Okay. Question number 1 is जैसे मैं लिख रही हूँ ना, in the same way you also write. Okay. If I'm not leaving line, you just leave the line in the same way. Question 1 is 2/2. Because this is a fraction. 2/2 is one fraction. Now you have to multiply it by 3/3 and find its equivalent fraction yourself. Okay. And yeah, find it yourself. Then write question number 2. 3/8 multiply by 2/2. Find its equivalent fraction. Divide the page in two equal parts. Do one thing, divide the page in two equal parts. Okay, right. Now the third one is 3/4 multiply by 6/6. Find out these equivalent fractions. Like करना कैसे? 2 3s are 6 and 2 3s are 6. Like 6/6. You have to do like this. 1 2 3. Fourth question is I'm writing here. आप भी ऐसे करोगे. Divide the page in two equal parts. 1 2 3 एक side पे लिखो और 4 5 6 next side पर लिखो. Right? In the same way, I am writing 4 5 and 6 in this way. 3/5 multiply by 4/4. 6/17 multiply by 2/2. And the sixth one will be 1/8 multiply by 8/8. Jaldi se, quickly do this. Do not send the answers because it is very easy. Next B का मैं answer check करूँगी. A का I will not check because it will take a lot of time if I check your answers.
Do it quickly. Type in the chat box once you complete it. Tell me the Ma'am, answer of the 6 second. and 16. 6 and 16 is 6 upon 16. Okay, Anmol? 3 twos are 6 and 8 twos are 16. Okay, Very ma'am. good. Okay, keep your mic off now. Okay, now Ansh Raj is present today. Oh my god, what I'm seeing. How is it possible? Okay, then who is there? Minha. Minha, switch on your mic. Minha, switch on your mic. Beta, tell me the answer of the third one. The answer of the third one. Yes. 1 minute, ma'am. Be quick, beta. 18 upon 24. Okay, why beta? Why is it so? Why 18 upon 24? Because if we multiply 3 into 6, Yes. it's 18, and Yes. if we multiply 4 into 6, it's 24. Very good. Excellent. Okay. Okay, then Parmeet. Parmeet, tell me the fourth answer. Unmute yourself and tell me the fourth. Amita, tell me the fourth answer. Parmeet. Sorry. Parmeet. Ma'am, the Beta. fourth answer is 12 upon 20. Okay, why so? Why so? Ma'am, if we multiply 3 with 4, it is 12, and we multiply 5 with 4, it is 20. Okay, very good. Okay, now Stuti will tell me. Stuti. 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 Daksh, let me ask others also, beta. Stuti. Yes, ma'am. Tell me the fifth one. The 16, the 18, the 4 would left. 12. Beta. Ma'am, 6 to the 12. 6 to the 12 and denominator. What will be then the denominator, beta? 34. 34. अग्रित बेटा प्लीज मैंने आपको म्यूट पर क्यों रखा हुआ है दैट्स व्हाई सो दैट यू डोंट स्पीक लाइक दिस जो आप अभी मुझसे यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं आप सारे के सारे ओके दैट्स व्हाई आई केप्ट यू ऑन म्यूट ओके युवराज नागर विल टेल मी टुडे युवराज नागर युवराज नागर युवराज नागर चलो ही इज नॉट आस्किंग टेलिंग विराट 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 अनम्यूट योरसेल्फ Beta, tell me what is the answer of the last one, Virat? What is the answer of last one, Virat? 8 upon 64. 8 upon 64. Very good. Okay. Now check your answers, everyone, whether you have done the same answers or not. If you have done anything else, just change it and correct it. किसी और ने कुछ और लिखा है तो change it and correct it. रब करके correct कर लो. Okay. Now we are going to start same exercise. Now draw the ending line here. Now draw the ending line here. After doing this, draw the ending line here.
and start writing question B. Right? Start writing next question B. In mine, there are only 8 lines left. Write next 4 equivalent. Write next 4 equivalent fractions. Write next 4 equivalent fractions. This is the okay. Write next 4 equivalent fractions. Okay. First one I'll do for you. Rest of the answers you have to do yourself. Okay. Suppose now see here how to do this. First of all, look here. First of all, look here and see here. The question is 2 upon 7. Okay. And we have to write its next 4 equivalent fractions. So I'm making a box like this here. It's given in your book itself. So you can make a simple box. If you don't want to make such box, you can make a circular box also. You can make a circular box also. 1, 2, 3, and 4. You can make circles. Okay. You can make circles or you just make a simple box. That's also correct. Now you have to write 4 equivalent fractions. 1, 2, 3, 4. तो एक काम करते हैं बेटा, एक छोटा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 4 और यहाँ लिखते हैं 5. छोटा सा. ओके, इसको हमें रब कर देना है बाद में. छोटा छोटा लिखा है. क्यों लिखा है मैंने ये? Why I have written it? हमें न्यूमरेटर को भी 2 2 करना है. यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करना है, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट वन 2 2s are 4 and 7 2s are 40. ठीक है. इस वाले में 2 से 2 upon 7 को भी आप टू मल्टीप्लाई बाय 3. 2 3s कितना होता है 6 और 7 3s 14 3s नहीं करना है, 7 से करना है मल्टीप्लाई. यही मेन है. दिस इज द मेन. 7 3s is 21. Or you can do one thing. 2 1s are 2 2. Okay. 2 3s are 6, 2 4s are 8, and 2 5s are 10. Or 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, and 7 5s are 35. Understood everyone? पहले first वाला. Do first and second. Third, fourth, fifth we will do in next period. Third, fourth, and fifth. Third and fourth we will do in next period. Write 4 upon 5. Start doing 4 upon 5. Make circle or you can make a box like this. Simple box also. Like this. 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 4 boxes you have to make. और क्या कर सकते हो, लास्ट में जो आपने रखा छोटा छोटा उसको रब कर दो. 2 रब कर दिया, 3 रब कर दिया, 4 रब कर दिया, and 5 रब कर दिया. Okay, like this you can do. Now solve it. Okay, good. जल्दी कर लिया. Done so quickly.
अरे कौन पूछ रहा है? Who is this? प्रत्यक्ष बेटा, I told you at that time only you can